to be increased, and action plans, hotspot, you can say hotspot action plans, city-specific action plans, micro action plans, and so many things. So main sources of air pollution, you know all the things, the industrial emission, domestic fuel, agriculture burning, suspension of road dust, construction and demolition activities, open burning of waste and vehicular emission. These are the main sources which are incorporated to combat in the city level action plans. So there is an interesting figure for the purpose of this Uttarakhand district. We have the three non-attainment cities. Dehradun, we have prepared the action plan. Kashipur, we have prepared. Rishikesh, we have prepared. All these three action plans has already been approved by Government of India, and making a total cost of these plans near about 56 crore, and all the authorities involving at the state level as well as the city level. Being a state pollution control board as a nodal agency, these action plans are under implementation at and under various stage of you can say progress. Categories, of course, there are various categories what we have incorporated in the action plan based on the type of execution. Nearly 60 action points have been designed. Policy level actions, 6% we have to make a policy like phase out of the diesel vehicles, like phase out of the polluted fuels. We have the regulatory actions to close down the you can say polluting industries and many more, and implementable actions. Implementable actions means the regular checking, regular inspections, compliance and monitoring. And based on the timeline of execution, we have you can say divided into the four categories: immediate actions to be incorporated within 6 months or 3 months, short term 2 years time has been given, and mid-term actions within 5 years, and of course long-term action like construction of highways and you can say ROBs and so many things. They have to be completed by 2030. But of course, we have to be 30% or 20% reduction by 2024. Uh, One of the important aspects of the clean air action plan is the hotspot identification. Because whole city is not a source of air pollution. Some hotspots are there. So who are familiar with these three cities, particularly uh, they are the clock tower, ISBT, and some other places. There are four hotspots in Dehradun, three in Rishikesh, and four in Kashipur. We have identified these hotspots, and action plan for these hotspots are have already been prepared, and micro planning for combating air pollution in these hotspots is under process. Under process means the authorities are taking action for implementation of these action plans. So various sectors, as I have already mentioned, the transport sector, industry sector. I am telling about the industry sector adoption of the zigzag technology in brick kilns. One of the example. One of the example is we have introduced the side hook technology by this induction furnaces. So I will discuss in the further slides. So these are the some of the sectors where we intervene, where the actions are taken up. This is the, as I mentioned, 56 crore is the total cost of action plan in three cities, and Government of India has disbursed 16.78 crore to the state government, and of course this has been disbursed to the various authorities for implementation. I am showing this slide because this is very much important, because 30 crore, like 56 crore is the figure, is the amount which we have to pay for clean air if we achieve the goal. You can say 56 करोड़ रुपए मुझे हवा की साफ हवा में सांस लेने के लिए जरूरी है 2024 तक, अगर हम अचीव कर लेते हैं तो various agencies, Ministry of Environment, of course, EBCBs, SPCBs, universities, institutions. We have identified some of the institutions as the Institute of Repute, like IIT Roorkee, IRIS, Nainital, and Doon University, and some Center of Excellence has also been identified for you can say for technical inputs from day-to-day basis. Regional offices of the Pollution Control Board, municipal corporations, Transport Department, RTO, ARTO, PWD, and SIDCUL. SIDCUL means State Industrial Development Corporation of Uttarakhand Limited. So these are the key institutions involved in implementation of the city level action plan. Yes, there are the sector specific action points. We have categorized into the 6 or 7 broad categories, where the capacity building and public outreach, road dust, construction, demolition, vehicle, industry, waste, biomass. Under these categories, 60 to 70 action points have been covered. And this is the summary for the Dehradun, for example, public outreach, or you can say road dust. Out of 13, 2 have been completed, 17 vehicles action points, we have completed 3. So we are the summary. We are 20% near about completed
we have completed 20% of the action points, and of course the air quality data it is being regularly monitored on weekly basis, or where the AAC-QMS is installed on a real-time basis. So these are the air quality status of Uttarakhand before inception of NCAP. So before inception of this NCAP, you can see it was 1.5 to 2 times higher amount of PM10 were recorded in litigate Kashipur, Haldwani and Rudrapur as compared with the national ambient air quality standard. So we have, you can say, just 2 times higher than the this NAQS standard. So what next? Next is to reduce it by 30%. So this slide I am making in between this slide because this is the comparison of 2019 data and 2021 data, pre-COVID data and post-COVID data. Because in the COVID, when unlock process was started, we are expecting to sudden rise in air pollution because the government has making several relaxations and indirectly or directly asked regulators not to put some restrictions because the economy to be grow. So we are expecting the sudden shoot up of the air pollution, but interestingly, after complete lock, it was expected that sudden rise in air pollution and it may cross the 2019 level. But interestingly, it shows reduction in PM10 level. This is the impression of NCAP in this city. So I am taking credit to all the authorities who are involving in implementation of the process, as well as the source who are generating air pollution. They have also increased their, you can say, economic and commercial activities by keeping in mind कि हमारे को air pollution को भी suppress करके रखना है. Now this is the target what we have given by CPCB and what we have achieved. For example, for Dehradun, we have the target for 2021-22 is the 12% reduction of PM10 level, and we have achieved 17% reduction. So again, 12% we achieved 17% reduction in Dehradun. So this is the impression of NCAP for Dehradun. Again, 9% target was given for Rishikesh. We have achieved 17% reduction. But due to some unforeseen reasons, and there may be some reasons I will discuss, there is a 5% reduction was observed in Kashipur against the 8%. Some railway overbridge and flyovers was underway in 2020 in Kashipur region, and that they cannot be stopped. So, and due to this, we observe this the reason why we have not achieved this target in the Kashipur. I accept, but we will try to get it rectified by the next target for the year 2022 and 23. Let's Diwali. This is also I'm putting this slide also for as a impression of NCAP. You can say that data on the Diwali day, air quality index 214 and 317 in 2020. Again 184 AQI for Dehradun and 327 in Diwali day. But in 2022, you can say how much reduced. 136 on pre-Diwali day and 247 on, you can say, on the Diwali day. This is the impression. Of course, I admit दिवाली पर पटाखे छोड़े गए हैं, बट अगर मैं इससे पहला डाटा देख रहा हूं जो इसमें स्लाइड में शायद नहीं है, लोगों ने दिवाली से पहले पटाखे नहीं छुड़ाए, पर्टिकुलरली इन सिटीज में कम छुड़ाए हैं, जिसका इम्पैक्ट ये है कि दिवाली वाले दिन हमारे को एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस के एक शॉर्टफॉल देखने को मिलता है. दैट इज ए गुड थिंग फॉर दिस स्टेट एंड फॉर एज वेल एज द हाईली डेंसिफाइड सिटीज. So in situation for other cities also. We have increased our monitoring network for air quality. In 1993, when this NAMP, National Ambient Air Quality Monitoring Program, was launched, only one station is there, and in 2022 we have now 21 stations. These are the city-wise status where how many stations, and target 13 districts हैं हमारे पास. उत्तराखंड में हमने 10 districts को cover कर लिया है. 77% of the area is covered. And only one continuous air quality is operational. However, two number of the AAC-QMS, one in Kashipur and one in Rishikesh, is under commissioning stage, and they will, my colleagues are there from Dehradun and Rishikesh and Kashipur. They have just informed me that within a week they will be started.
Only 2 minutes. They are the best practices and initiatives. Approved fuel policy. We have completely banned furnace oil and petcoke for the new industry. Completely banned. And those industries who are presently using this fuel, they have to switch by 2024. Tidal draft technology for induction furnace. There's a very much interesting intervention जिसमें हमारा fugitive emissions from this furnaces है बिल्कुल बंद कर दिया है. Zigzag technologies in brick links है और integration of all pollution checking centers with a single based software. आप कहीं से भी पता लगा सकते हैं. इसके साथ में there are the not required. हाँ, ये स्लाइड में आपको जरूर दिखाना चाहता था. यूरोपियन कंट्री जो WHO का जो स्टैंडर्ड है PM10 का, that is you can see it as 24 hour in 205 और 2021 में it was 45. बट हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड PM10 का 24 आवर एवरेज it is 100. हम WHO से ऑलरेडी डबल PM स्टैंडर्ड और उसके बाद भी हम 150 PM10 ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो see how where we are falling. So we are the intervention monitoring required है. उनका मैनुअल करें या हम ऑनलाइन करें. उसके based on the data strategies to be made, based on the strategies, the technical and policies to be framed, they to be executed for the clean air. So thank you very much. And I expect कि जो data research का है वो निकल के है और that can be executed at the field. जी मैडम. हाँ, इसका मैडम दो चीज में आपको आंसर देता हूँ. पहला ये है कि स्टेट एयर एक्शन प्लान is under process and where is the source apportionment or the particular specific sectors are identified. Forest fire and road widening is one of the sectors. जिससे हमारे को ये पता चलेगा कितना कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का एयर पोल्यूशन में या स्टेट के क्लाइमेट को हुआ है. नंबर 2, as far as the industrial area is concerned, we have identified 2 critically environmentally polluted areas. उन environmentally polluted areas में हम क्लीन एयर क्लीन फ्यूल को ला रहे हैं और इनफैक्ट रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमने इंस्ट्रक्शन कर भी दिया है. नई इंडस्ट्री को हम सीएनजी और पीएनजी पर ही अलाउ कर रहे हैं. नो सॉलिड फ्यूल इज देयर. नहीं, डेफिनेटली हम पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं. आपका जो भी एकेडमिक्स का सजेशन है डेफिनेटली दिस विल कम टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ आवर बोर्ड. सो वी विल डेफिनेटली इंप्लीमेंट इट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for your kind words. Now, I would like to invite Professor S.P. Khatkar, Emeritus Professor, MDU Rohtak, and former Director UI ET Rohtak, and Dr. Alok Sagar Gautam, Assistant Professor, HNBGU, to present a memento to Dr. Ankur Kansal as a token of respect and appreciation. Now I invite our next speaker, Dr. Divan Singh Vish. Dr. Divan is a research scientist at Indian Institute of Tropical Meteorology in the Delhi branch. Dr. Divan has a research experience in the field of atmospheric sciences at IITM, and he has been working in physical, chemical, optical properties of aerosol over Delhi, Indo-Gangetic Plain, and Himalayan region. He has also worked with total carbonation aerosol studies, precipitation chemistry, air pollution sources, transport, and climate change. He has also received several awards, like professional awards in 2015 from Ministry of Earth Science, Government of India, Excellence Award in 2019 from IITM,
He is a life member of Indian Aerosol Science Technology Association, Mumbai, India, and he has also published lots of papers. And he has also visited several countries like USA, Sweden, Nepal, and Portugal for his research endeavors. I welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for nice words and good noon to all of you. I'm going to present some collaborative study with Department of Physics, HNB Kadwar University. And I would like to also thank to Dr. Alok Sagar Gautam and Dr. R.S. Negi from Urban Development Department, who started this study in 2016. So I want to skip some basics of aerosols. So many speakers have already talked from last 2 days, or my colleague Dr. Srivastava have already covered some basic things about aerosols. Yes, I am going directly to objective to study the physicochemical characteristics of aerosols and weight deposition and their associated environmental impact at Garhwal region to characterize the variations in aerosol type and density originating from complex mixture, anthropogenic pollutants and mineral dust using ground-based direct monitoring. And another study like identifying the source and characteristics of carbonaceous aerosols like organic carbon and elemental carbon and day-to-day variability in PM2.5 concentrations. To understand the influence of anthropogenic, sorry, yes, anthropogenic natural sources as precipitation, aerosols by using certain statistical techniques for the source apportionment. And the importance of the study, it is very few studies have reported in Himalayan studies. Such some studies have reported in Eastern Himalaya or some Professor Punyal from Western Himalaya and other some studies in Nainital, Harris or Mukteshwar. Otherwise, I did not found any research publication in Garhwal and Kumaon region. So, I am very much interested to study these physical and chemical properties of aerosols in Himalayan environment. So, this is the sampling site Choras campus. Here, and you know about all the things about it. The height of the in Choras campus is around 560 meters above mean sea level, and it is situated in means like a valley. We are thinking about it is Himalayan, but it is not too much in higher altitudes. And surface, if you see the surface meteorological parameters, 2015 December to 2016 December. So we can see there is not too much change in 2016 and 2017. It is like same in winter and summer and other season also. And instruments used. Which instrument we are using for monitoring aerosols? This is PM 2.5 sampler and for collecting the 2.5 samples and this is the PM10 sampler which we are using for PM10 samples in quartz microfilter paper or you can see the before sampling and the after sampling. These samples is from January or December. And another studies we are just it is ongoing the precipitation chemistry. We are collecting the rain through bulk collector
and then analyzing some statistical, sophisticated instruments. So these are the setup of our instruments at Delhi laboratory. First of all, we are collecting the mass of these samples, then analyzing for chemical analysis through ion chromatography, and one part of them we are analyzing for OCEC analysis, and this is the AAS. Sometimes we are analyzing the cations like sodium, potassium, calcium, magnesium from this instruments, and it is using for both anions and cations like fluoride, chloride, nitrate, sulfate, like that. Yes, you can see the results from 2016 or 2017 from here. In 2016, we have collected PM10, PM2.5, both the samples, and 2017, we have just finalized the data era only for PM10. And PM10 it is going on. So we can see from here, there is not too much change in both the year, but all the time it is higher from the stipulated national ambient air quality, which is given by CPCB. You can see here the PM for PM 2.5, it is above the 40 microns, 40 micrometer per meter cube, and here also it is all the time it is high. Where if we see during the monsoon season, it is quite low, but other season it is all high. And we have analyzed for OC and EC these samples, but we have some drawback. We cannot analyze from 2016 because that time we have collected the sample on glass microfiber. So 2017 we have started all the samples on quartz microfiber filters. So it is too much high value for EC or OC. If we see for EC, it is not, it is just like in cities like Delhi. If we are seeing Delhi, it is measured around sometimes 6 to 10. So it is all, if we see the average of these samples, it is like that 5.5. So it is too much high. If we see the seasonal variations, so most maximum we have found it is in pre-monsoon, post-monsoon season. Then winter. This is the chemical analysis of these samples. We want to know what is the contribution of different species in that. So it is also high the samples value and percent contribution you can see from here. And we have plotted it for the different seasons. So if we see the for different seasons, most commonly it is higher during the post-monsoon season. That time biomass burning, like stubble burning, activities are going on in IGP region. So most of the pollution is transported to IGP or southern region of Afghanistan, Pakistan, like that. So then we want to see where this pollution comes. So it is general idea given by wave trajectory analysis for clustered analysis during different seasons. So all the time, so except monsoon, all the season pollution is comes from
Afghanistan, Pakistan, and western side parts of India. This is another study, precipitation chemistry. If we see the daily pH of these samples, so we can see here the pH value for rainwater is 5.6. But if we see here, starting the monsoon, it is higher than the 5.6 because most of the dust particles are available during that time. After set washout effect or settling down through rain, we can see here some samples is finding acidic nature. And after some times in August and September, it is quite high. So means we can think about that possibility for acidic rain in Himalayan region. We can see the different chemical species in rainwater chemistry. So results are showing quite high, like in urban cities. Then we have plotted break trajectory for the year in different heights, 500 meter, 1000 meter and 15,000 meter. So it is showing that the 1000 meter and 1500 meter, it is comes from this side all the time. And other seasons we can see other from IGP region or eastern side. Okay. This is the conclusions. Please note. Yes. This is the publications which we have reported from 2016. 6 publications is coming from Garhwal region in Srinagar, and my colleague Dr. Panikar from IIT Pune. He is studying at Satupan Glacier. I am also involved on that. And one study is I have published from Nainital because rainwater chemistry values are very high and not reported in any region in Himalaya. For future directions, so study to understand the possible impact various air pollution on human health, also essential over the region, and also quantifying the different sources. Source enforcement studies is very much needed. So it is working. We are also working on that, but we have some few data right now. After 2-3 year data, we are thinking like that. Thank you for the attention. Thank you, Devansa, for your very nice presentation. And I would like to invite any questions. If somebody would like to ask something, want to know something about this. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Charu Jhamaria, Professor Veena Joshi, and Dr. Alok Sagar Gautam to present a memento to Dr. Divan Singh Best as a token of respect and appreciation.
Thank you so much, sir. Now, before carrying forward, we'll take a short tea break. ये हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा टी ब्रेक के बाद भी। कुछ अनाउंसमेंट हैं, जो कि कल बद्रीनाथ का ट्रिप हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 और 5 o'clock हम लोग डिपार्ट करेंगे GMBM श्रीनगर से, गौरव मंडल विकास निगम श्रीनगर या फिर चौराहा स्कूल से जो लोग गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। इस तरीके से परसों 8 तारीख को ग्रहण है, इसलिए 7 को ही हमें सारी चीज़ें वहाँ की कंप्लीट करनी है। और 8 की अर्ली मॉर्निंग प्लीज़ आप लोग जो जल्दी नहीं उठ पाते वहाँ पर परेशान मत करिएगा, क्योंकि सबकी ट्रेन फ्लाइट सबकी कनेक्टेड है, इसलिए हमको 4:30 वहाँ शार्पली हमको वहाँ से रिटर्न होना है हर हालात में। और इसमें आप अगर देखेंगे हमारा प्लान तो पूरा रूम वाइज कंप्लीट है। हमने आपको शेयर भी किया है कुछ 11 पार्टिसिपेंट्स और जुड़ रहे हैं। जो लोग नहीं जाने वाले एक बार हम प्लीज और कंफर्म करते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर बोलेंगे तो कहेंगे आप लोग क्यों ऐसा पैसे की बात कर रहे हो। हकीकत ये कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है और इस समय वहाँ पे इतना विंडी वेदर है, 3 बजे के बाद में बहुत ठंडा वहाँ शुरू हो जाता है। जो लोग बद्रीनाथ से धीरे धीरे सब लोग जोशीमठ आने लगते हैं, होटल्स बहुत कम है, इसलिए प्लीज जो लोग नहीं जाना चाहते हैं अभी मैं 1 घंटे के अंदर कंफर्म कर दीजिएगा। आपकी कोई किसी तरीके की इशू नहीं जाना चाह रहे हैं आप लोग तो कंफर्म करिएगा। और इसमें मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मिस्टर गिरीश कुमार जो हमारे MSc स्टूडेंट है, सारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट ट्रैवल सब ये देख रहे हैं एमसी और उनकी टीम। 9639 नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग, ताकि बार बार फिर जो है अगर मुझसे कुछ अगर छूट जाता है तो वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। 9639 806596। रिपीट कर रहा हूं, 9639 806596। थैंक यू। एक और ये लगेज का इशू आएगा कि हम लोग लगेज कहाँ रखें, क्योंकि जो आप रिटर्निंग जर्नी होगी फ्रॉम बद्रीनाथ टू डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून, तो लगेज आपके साथ ही रहेगा। आपको उसी तरीके से हम लोग दोबारा फिर होटल्स में नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, तो आपको जो भी सामान जिसके पास है प्लीज अपने साथ कैरी करिएगा। बस के साथ ही हम लोग जो है तो आपकी वापसी उसी तरीके से होती रहेगी। थैंक यू।
main goal of he is working on the development of farming cooperative system in Uttarakhand. So then I request Mr. Davis, you have to start your presentation. Thank you. Thank you. So as Dr. Nagy said, my name is Davis Clark, and I'm a Fulbright Nader student researcher from the United States. I am here conducting my master's project. I'm a master's in environmental management student at Western Colorado University, partnered with the Department of Rural Technology here at HMETU. So I'll be here for 1 year to conduct that I am presenting on. This is a proposal for the project that I plan to do over the course of the next year. So in the interest of time, I'll just lead through the first part of my presentation. So as I said, I'm from the United States. I've worked on farms across the United States and in other countries. And where do I put it? So a huge inspiration of this project, which is focused in farmer cooperatives, came from my observation of the cooperative system in my college town in Colorado. A cooperative system that groups together the farmers and producers in the valley and access markets, reduce competition, and bring education and awareness to agricultural problems across the valley. So from observing this system that operates very well in my college town, I thought it would be wonderful to see how this system works and learn from the existing Indian cooperative system, which is very advanced, and there's lots to learn from here. So my project comes at the intersection of agriculture, climate change, and community development. So it seeks to combine the study of impact change on agriculture with a focus on how farmer cooperatives can increase the resilience of individual farmers, rural communities, and local ecosystems. So I'll just go through these are my partners. So why this project is important. So some of the impacts of climate change on agriculture that have been documented and researched thoroughly. So higher temperatures and extreme heat are causing to crops and animals, as well as dangerous and difficult situations. Drought also causes and decreased yields, degraded landscapes. Changing monsoon patterns, late arrival monsoons can stress young plants after planting. Rainfall during harvest months can decrease yields from mold or mildew growing on wheat or rice. Heavier rainfall events causing landslides, soil erosion, flooding, and crop loss, soil sedimentation over the fields, biodiversity loss. So as temperatures rise or things become drier or monsoon patterns change and species go extinct, this loss of biodiversity can have severe effects on agriculture from loss of or beneficial insects. Pest and disease outbreaks can cause crop damage, decreased yields, and of course, the demand for more pesticides. And not as much of an issue here, but in coastal regions, as the sea level rises, this can cause saltwater intrusion into the groundwater, and of course, land loss from the sea level rising. And then as the climate change, it may become difficult for farmers to predict what crops can be grown in what areas. Learning about how farmers can adapt and mitigate to the adapts of climate change. Just a bit about conventional and industrial agriculture. Okay, so some of the issues with conventional or chemical agriculture: the use of chemical fertilizers can deplete soil fertility and pollute waterways. Chemical can be dangerous to human health, insects, and pollinators. And the use of heavy machinery can kill soil microbiome. The excessive tilling can also destroy soil structure and can dry out soil or make soil highly vulnerable to erosion. And lastly, the use of GMO crops can reduce genetic diversity, and the seed patents that farmers have to, or the corporations put seed patents
to pay for the seeds, and these profits are going more towards the corporations rather than to the farmers themselves. And also GMO crops are demanding of high chemical inputs and irrigation, causing more costs on the farmers. On the other hand, what I'm promoting or here to work with is organic farming systems. So the importance of organic agriculture is that it doesn't require chemical inputs, so fertilizers and pesticides that are produced through industrial processes, such as taking nitrogen out of the atmosphere and creating ammonium nitrates out of. Also putting low-till or less-till or regenerative agriculture systems that improve soil health and invest in soil structure and soil microbiome. And then lastly, a biodiverse or a polyculture, non-GMO type of agriculture that encourages biodiversity in the agricultural landscape rather than planting monocrops of one crop that are highly vulnerable to climate changing events. So lastly, the importance of farmer cooperatives and how they play a role in this agricultural system. I mentioned what I observed in my university town in the United States. One of the key players, especially here with cooperative systems in India, is they have a savings and loan account that the farmers can put in the amount of money they're able to a month, maybe 100 or 200 rupees, and then if they need a loan or if you need to buy new farm equipment or whatever it is, they can take the loan out of the community account and return that money through interest payments through the community and keeping the money in the community rather than to the bank, paying lower interest rates to help the farmer and keep the money in the community. And then also really important is the seed savings sharing programs that lots of cooperatives are interested in. So these seed saving programs essentially are promoting local resilient crop varieties. So the rice or the wheat or whatever is being grown, they breed seeds in the local region and then share them with neighbors, which then makes the crops more resilient to that local ecosystem. The cooperatives can have immense impacts on reduced market competition and improved market access, and then also farmers are able to share their labor across the different farmers in the area and reduce demand or stress for finding labor. I'm just going to move on. So how farmer cooperatives are linked to the individual community agriculture and climate resilience of the agricultural system. So on the individual side, as I was saying, the access to the local network of farmers that support each other can create a feeling of belonging, connection, and sense of purpose to the land and the community. And of course, sharing of seeds, crops, money, and labor can reduce stress and worry over the farmer themselves. On the community scale, families can benefit from product exchange. So one family is not able to fully produce their crop in 1 year, they might have another family or two or a whole community come together to help support them. So it's a really community support network that helps each other in the community, as I mentioned, paying loans back to banks outside the community to pay loans back to the community themselves. And then lastly, having a stronger community collaboration system. So as the farmers work together, they'll find that they can solve their own problems together rather than fighting against issues that they're all having together. Agricultural resilience comes in the form, as I was saying, of the seed varieties that are adapted to the local climate. This can also have a strong effect on benefiting the pollinators and insects in the area if you're not using chemicals or pesticides and fertilizers that are detrimental to these creatures. And then, okay, I'll just move on for a second to get to my project objectives. My project is a two-part study. So the first part is an analysis of the farming cooperative system in Uttarakhand with a focus on cooperatives, community, and individual resilience. And the part two is a development of a farmer-led cooperative in Kanatal, which is in Tirgarwal, a case study of local self-organization amongst farmers. So in learning what farmer cooperative system is already in Uttarakhand, India, learning what the challenges of farmers and NGOs that work with the farmers are, and learning how this can be improved upon and to produce suggestions on how the crop system in Uttarakhand can improve specifically to better suit farmers'
increase community resilience and promote health. And I'm interested in facilitating the organization of a group of farmers in Canada and to connect local farmers of Canada to local organizations and resources that can assist their cooperative development and to collaborate with Canada farmers on how to design a resiliency-focused farmer cooperative to act as a role model and example for future cooperatives. So I'm interested in the connection of farmer cooperatives and climate change and how farmer cooperatives can help increase the agricultural resilience of communities in the face of climate change. And this will look like have an analysis component as well as a community development and observation component with these farmers in Canada. So I'll just move past. So the important connections is how this connects to the United Nations Sustainable Development Goals. So I would argue that the farmer cooperative system in promoting agricultural and biodiverse farming can address just about every UN SDG goal, if not all of them directly or indirectly. How do this? So I'll visit as many farms in Canada as possible. This is me here talking with a farmer in Canada, running down some of the farmers he knew that would be interested in this project. And he had a list of 12 just at the top of his head. So I'm interested in talking with those farmers, finding out what their challenges are, and collaborating with the local leadership to organize a cooperative and partnering with local NGOs to access more resources for those farmers, and then creating a framework for their farmer cooperative with a focus on that individual, community, and ecological resilience. So just my project study area is here on the Chamba Missouri Road. And these are the farms in the area that I'll be working with. And these are just some observations I had from in the site location. So as many of you have probably observed as well, on the left here is a typical farm situated in the hills of Garwal. They are on steep hill slopes that are heavily, densely forested, and they rely on steppe or terraced agriculture. And they in the middle here, they often have these small, diverse kitchen gardens. So this is the type of agriculture that I think is extremely resilient to climate change and different types of pest invasions or disasters because it's biodiverse and they're growing many types of crops in one area. So any sort of disturbance comes to this garden. If one crop is lost, it's likely that many others will still survive versus having one crop in the area. If a disturbance comes, it may destroy that whole crop. And on the right here is a farmer that is showing new high density apple orchard. This is a technology that the farmers in the area are experimenting with. They plant the trees only 1 meter apart and they prune them so that they produce a smaller quantity of apples but at a better quality. David, could you please continue? Okay, yes. So as I said, this will be a project that goes over the course of 1 year. I've been here for 3 months working on learning Hindi, and over the winter I'll be conducting these farmer interviews and discussions with the nonprofits to learn more about the cooperative system. And then over the course of next spring and summer, I'll be working with the farmers to develop this farmer cooperative. And that's all for now. Thank you. Any questions from the audience? Okay, thank you, David, for your very good presentation. Thank you. Now I call upon Nishta Srivastava. Nishta. शुभम यादव, अजय कुमार, मीरा गोस्वामी, Yes, Meera. बेटा जल्दी आओ। Meera is going to present her topic, impact of primary pollutants on some roadside tree species of Haridwar, Uttarakhand,
a multiple linear regression analysis approach. Yeah, please complete the presentation in 10 minutes. Good afternoon, everyone. The topic of my presentation is impact of primary intelligence on some roadside tree species of Haridwar, Uttarakhand, India, a multiple linear regression approach. These are the outline of my presentation. As you all know, the air pollution is any unwanted chemicals or biological materials in our environment, which affects the well-being of humans, animals, and the vegetation. As we can see in figure, the number of deaths is about three major, about in according to epidemiological research, air pollution can lead to cardiovascular, neurological, and the pulmonary disorders. Air pollution not only creates a problem from human health, but also creates lots of changes to the plants, especially at the roadside plants. Pollutants such as the sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matters are considered as the most frequently released air pollutants. In my study, the multiple linear regression approach, which is a standard technique widely used as a multidisciplinary prediction tool, which is based on the use of the multiple variables for developing the statistical models and time series analysis for forecasting on a specific system or process. These are the objectives. First one is to monitor the concentration of primary air pollutants of Haridwar district, Uttarakhand, and second one is to assess the impact of air pollution on biochemical characteristics of selected tree species growing along the roadside of Haridwar district, and to develop a multiple linear regression model. These are the material and methods. The study area includes the site one, which is Guru Swami University, Haridwar, which is considered as control site. Second one is Tirupur, Haridwar, which is an industrial site. Third one is Ranipur Mall, Haridwar, which is residential traffic-gated area. Next is measurement of concentration of air pollutants at the selected site. The sample was selected with the by the procedure of SO2 and NO2 was estimated by Western heat method, and NO2 was measured by the Jacob and Herschel method. Gravimetric method was used to evaluate the concentration of PM2.5 and PM10. These are the study sites. These are the three species selected for the biochemical analysis. A indica, 2 Tina ciliata, Callistemus, Cestinus, and the Pyrium body. These these are the physiobiochemical parameters. The in my study, air pollution tolerance index was also calculated, which is with the help of the ascorbic acid content, total chlorophyll content, pH content, and the relative water content. And on the basis of given table, we can assess the air pollution tolerance index of the selected species. These are, this is the prediction model, which is a multiple linear regression model used to develop to assess the impact of air pollutants, and on the biochemical parameters. In my study, the independent variables are the air pollutants, and the independent variables are the biochemical parameters of the selected plant species. These are the result and discussion. The status of ambient air pollutants in different seasons in the year of 2022 to 2021 from monsoon season to the post-monsoon season. And we can see the pollutant concentration in winter season are quite high due to the stable environmental conditions.
while in monsoon season, the concentration is quite low due to the washout of the pollutants. Due to the- These are the biochemical responses of A indica with respect to the air pollution. As we can see, the dust deposition potential, relative water content, and the ascorbic acid content in winter season or in the polluted season is quite high due to the adaptive behavior of the tree species with respect to the air pollutants. And in the similar manner, in the monsoon season, the properties of the decomposition and solving acid content and the relative water content are high, are low, and the chlorophyll content, carotenoid content, and the pH in monsoon season is high due to the wash out of the pollutants and the increasing in rate of the photosynthesis process. Similarly in other plant species, same pattern is shown. These are the results for MLR model for impact of air pollutants and dust deposition on the biochemical responses. In in second table, we can see the model shows the best fitted result with regression coefficient values equal to 0.845 to the 0.922, and for the please visit the next one. T sequence and T evaluator, we can also say that the model shows the best fitted result with greater with the value R square is greater than 0.715. These are the measured value and the predicted value for impact analysis of ambient air pollution on the selected leaf release, and we can say that the measured value and the predicted value show quite the correlation, similar positive correlation. These are the APTI of selected plant species. APTI is the pollution tolerance index on the basis of the four biochemical parameters: ascorbic acid content, pH, total chlorophyll content, and the carotenoid content. We can assess the APTI of the plant species. And in the A indica and B theater, the APTI of the APTI is high, and in C citrus and P guava is low. And we can say the C citrus and P guava are the sensitive species, and the A indica and T citrus are the efficient for the pollution removal. Now the conclusion. The mean concentration of the selected leaf species has shown significant impact on biochemical parameters by altered ambient air quality because of the anthropogenic activities like rapid urbanization and industrialization. At polluted site, the absorption of pollutants increase the ascorbic acid content, which might be attributed to changing the induced reactive oxygen species. Plants under stress conditions have high relative water content and are more resistant to the air pollution in comparison to plants with low relative water content. This might be due to the reduction in transpiration process due to stomatical closure by dust accumulation in leaves and the water level of soil at the contaminated site. The biochemical characteristics of the green level can act as the ecosystem drivers for air pollution mitigation by developing suitable adaptive characters for exhibiting the pollution tolerance and sequestration more pollutants for the conservation of environment. According to APDI, the system A indica was most tolerant, and the P polymer and citrus are the intermediate. Additionally, in my study, I have also included the anticipated performance index, which is the ideal tool for the development of the green belt in the polluted area or along the roadside area for mitigation of the air pollution. These are the Thank you, Meera, for your precise and very good presentation.
Now I would like to request the audience. I would like to request audience if there are some questions. Just broadly plants. सर क्योंकि वो एक तो डस्ट की एक्यूमुलेट करेंगे और तो उससे पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा तो और सर मैंने जो एपीआई एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके थ्रू भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी ट्री स्पीशीज होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी पॉल्यूशन Thank you so much. Now I would like to thank Associate Professor Dr. Charu Jhamaria chairing this technical session very delightfully. For that, I would like to invite Dr. Alok Sagar Gautam to show our respect and appreciation. For that, and we'll assemble after the 10 minutes for the validity session. पूरे 10 मिनट्स के बाद असेंबली हो चलेगी सेशन के लिए आप लोग कर सकते हैं
Thank you very much, sir. Now, I am privileged to invite Honorable Dr. Atul Kumar Srivastav, Scientist, IITM Delhi, New Delhi, to have their designated seat. Thank you, sir. Now, with the immense pleasure, now I would like to invite Professor R. S. Negi, Head of Department, Rural Technology, to have their designated seat. Please, sir. Now, with great pleasure, I would like to invite Professor P.C. Upadhyay, Head of Department of Physics, to take their designated seat. Please, sir. Thank you, sir. Now, with immense pleasure, we are pleased to invite Dr. Alok Sagar Gautam, Organizing Secretary, to have their designated seat. Now, for lighting of lamp, may I request our Chief Guest, Dr. Ankur Kansal, and all dignitaries. And for Saraswati Vandana, I request Department of Physics to come over. दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते धन्यवादो कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यां विकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने
सर्वेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्. Thank you very much. Now I request Professor T.C. Upadhyay to present bouquet shawl to our chief guest, Dr. Ankul Kansal. I request Professor T.C. Upadhyay to present bouquet shawl to Dr. Atul Kumar Srivastav. Now I request Dr. Alok Sagar Gautam to present bouquet and shawl to Professor R.S. Negi. I request Dr. Alok Sagar Gautam to present bouquet and shawl to Professor T.C. Upadhyay. Now I request all committee members to present bouquet shawl to Dr. Alok Sagar Gautam. Moving forward to the valedictory session, I would like to invite Honorable Professor T.C. Upadhyay, Convener AAC 2022, for their remarkable words. Hello. Now in the today's very busy function, I feel very obliged to welcome in this function our dignitaries, our respected participants, Dr. Kansal sir, Dr. Vasu sir, Professor Negi sir, Head of Civil Technology Department, and our beloved Dr. Gautam sir, our secretary of this whole program, organizing secretary,
I welcome. After that, I welcome all other senior professors sitting in this audience and who are from different parts of country, maybe from our university or from different university. You are most welcome, sir, in this very degree function. Then I welcome my colleagues and my friends in this university who are in this audience. And after that, I welcome the all respected participants or scientists from our university, different departments from other universities who have participated in this event and made this event successful. You all are welcome. After that, I welcome all our future scientists, means our PhD scholars and PhD scholars of all subjects who are sitting here in this audience. You are most welcome. Then our I welcome all the next future scientists who are our in the organizing committee, our PD students, our UT students, and other persons who are not students but who are also participating to make uh, this event successful. And then I welcome our non-teaching staff of our university who are also present here. So I welcome you all. And in the last, not least, if anyone has been left by me, so they are also welcome. All the staff of this auditorium, you are all welcome. And thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request Honorable Dr. Alok Sagar Gautam for gracing the stage with their notable words. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected Dr. Arun Kansal sir, chief guest of this webinar session, Professor R.S. Negi sir, Dr. Atul Kumar Srivastava sir, and my guardian of the department, Professor T.C. Upadhyay sir, of the dais, all the senior faculty members, delegates, participants, students, most important in my life, my wife and my two daughters, Laska and Lavya, who is also sitting in this auditorium. I welcome you all for this webinar session. बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई और इसमें आज क्योंकि वेबिनार सेशन है बहुत सारी चीज़ों को समराइज करना है, बहुत सारी चीज़ों का लेसन हम लोग को लेके जाना है। पॉलिसी फॉर्मेशन में आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम आगे यूनिवर्सिटीज़ को पहुँचाएंगे और इसमें हम हिंदी में बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बात आप लोगों के बहुत अच्छे तक जाए, समझ में आए कि हमारा जो पर्पस था इस ऑब्जेक्टिव इस कॉन्फ्रेंस का वो बिल्कुल क्लियर रहे। ये कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ने लीड किया था और इसमें स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेजेस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज, ये सारे स्कूल्स ने फिजिक्स के जो भी कोर थीम था इस कॉन्फ्रेंसेस का, फिजिकल एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरोसोल्स, वो उन्होंने अपने अपने फील्ड से कनेक्ट किया। जो कल का पूरा दिन था वो बहुत हैक्टिक रहा। मोर देन 200 एब्स्ट्रैक्ट्स और ओरल पोस्टर प्रेजेंटेशंस इस पूरी कॉन्फ्रेंस में हुए हैं। कुछ के हम ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करा पाए क्योंकि अभी हमारा 1:30 हो रहा है और कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं, इवनिंग से सबको पहुंचना है देहरादून ऋषिकेश तक, तो हम उन लोगों को ऑनलाइन अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं। अगर वो लाइव हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो वो मुझे फील करें कि हाँ कुछ हमारी इश्यूज रहे ताकि हम नहीं कंडक्ट करा पाए। और इसमें जैसा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट सेशन था इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम ने जिक्र किया था कि सोसाइटी और साइंस के लिए
हम लोगों के लिए काम करना है और उसी के दायित्व को निभाते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और इसमें हमारे 12 टेक्निकल सेशंस हुए। इन 12 टेक्निकल सेशंस को जो है लगातार हम लोग सेशन और चेयर रिपोर्टियर ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे जो है सीनियर फैकल्टी मेंबर, डेलीगेट और हमारे स्कॉलर्स उन सबको दी गई थी और उन सब ने उनको बखूबी से निभाया। मैं उन सभी का अपनी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑर्गेनाइज कमेटी ऑफ एरोसोल एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको जो टास्क असाइन किया गया था वो टास्क आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत अच्छे से निभाया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब तक फंड नहीं होता शायद हम इस सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस थी और इसमें 5 स्कूल में कम से कम 16 डिपार्टमेंट्स अकोमोडेट किया हमने। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हमारे पास और इसमें जो भी डेलीगेट्स हमारे 16 डिपार्टमेंट्स के थे, ऑब्वियस मास नंबर है और चूंकि ये हॉल 1000 से एवं कैपेसिटी का है और जब हम लोग बाहर निकलते हैं तब दिखते हैं कि अरे तुम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, कुछ बालकनी बैठे रहते हैं, इधर उधर। तो बड़ा दिखता है कि यहाँ पर बहुत खाली खाली था, लेकिन हम जो बाहर देखते हैं तो 350 का जो है जो नंबर है वो हमेशा हमने रीच किया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जब हम लोग कहीं पर ज्वाइन पे जब हम इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरीके का नंबर आना और इस तरीके के रिकमेंडेशंस आपके डेलीवेशंस जो है डेफिनेटली एक साइंस और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा जो है कार्य करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। इसमें मैंने स्पॉन्सर्ड जो एजेंसीज हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो ये लोगो हमने इन सबकी यूज किए हैं और प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट किया है। साथ ही जो हमने आपको ई बुक एब्स्ट्रैक्ट बुक जो सबमिट की है विद दी ISBN नंबर दैट इज पब्लिश्ड बाय एंशिएंट पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, वो उसमें मैं कुछ जो भी स्पॉन्सर्स में नाम ले रहा हूँ, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, ऋषिकेश कर्णप्रिया प्रोजेक्ट RVNL दिल्ली, उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड EKPCB उत्तराखंड, बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंस BRNS मुंबई, हेमचंद्र बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंटेलिजेंस CSIR, TSI इंस्ट्रूमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, एनरोटेक इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैराबैंक। दीज आर दी फंडिंग एजेंसीज। और जैसा कि हमने कल आप लोगों से जिक्र किया था परसों कि आजकल गवर्नमेंट से पैसा लेना उसकी इतनी फॉर्मेलिटीज होती है। मैं EKPCB का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक ईमेल में मुझसे कहा कि ये मेरी टर्म्स कंडीशन है, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट देन वी विल स्पॉन्सर यू, अदरवाइज नहीं। और सबको एक अकाउंट दिया गया, धीरे धीरे इमीडिएटली जो है वो अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर साइंस है, CSIR है और जो मिनिस्ट्री है उसके CNA अकाउंट, जीरो अकाउंट, PFMS, हमने अकाउंट के इतने चक्कर काटे हैं और अभी भी जो है पैसा सब फंसा हुआ। ये जो आप ऑर्गेनाइज देख रहे हैं, जो भी एडवांस दिया गया है वो जो अभी तो मेरी पॉकेट का ही लगा है, कब मिलेगा कब वो तो आगे की बात है, कितना कटेगा। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोगों की स्माइल और आप लोगों की फीडबैक जो हमें समय समय पर मिलते रहे वो मेरे लिए जो ऊर्जा का स्रोत रहे हमेशा। और ये जो रिलेशंस है हमारे वो पर्सनल और एकेडमिक रिलेशंस, रिसर्च कोलैबोरेशंस उसमें अगर कन्वर्ट होंगे तो शायद ये जो कॉन्फ्रेंस का जो ये हमारा पर्पज है वो सॉल्व होगा। और इसमें मैंने परसों भी इस बात को जिक्र किया था कि हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर AK खंडूरी सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए उसकी टर्म्स कंडीशन फॉलो करने के लिए कम से कम 3 महीने का प्रोसेस लगता है। अगर पैसा आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद मेरे जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत तरीके से सपोर्ट किया था और शायद हम आज यहाँ पर आ पाए और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
बहुत सारी क्वायरीज है पब्लिकेशन को लेकर के, और चूंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि एल्सेवियर और स्प्रिंगर जर्नल्स, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नल्स हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर will be accommodated in the Journal of Water, Air Pollution, Aerosol Science Engineering, Stochastic Environmental Research and Assessment, Indian Journal of Environmental Protection, International Journal of Science and Technology, Journal of Science and Technology Research. अभी हमारा अभी तो हम लोग बहुत कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा सा हम लोग 15 डेज का रिलैक्स लेंगे, उसके बाद जब हम लोग रीयूनियन होंगे तो जरूर हम आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे कि आपके जो पेपर्स हैं आप लोग कॉल कीजिए, और मे बी हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है हम कुछ डेट फाइनलाइज करेंगे कि हम जो है आपसे हम फुल लेंथ पेपर हम ले रहे हैं आप लोग की प्रॉपर प्रोसेस रिव्यू के साथ, क्योंकि हमारा टाई अप इन जर्नल्स के साथ हुआ है तो आपको डायरेक्ट सबमिशन होगा वो जर्नल्स के साथ, आपका मैन्युस्क्रिप्ट आपको खुद सबमिट करनी है, प्रिज्म आपको रिमूव करना है, आपको वहाँ पे स्पेशल इशू कॉन्फ्रेंस के नेम से आपको दिखाई देगा। इसमें हमने एक बात और, चूंकि हमारा समय की कुछ बाध्यता रही इसलिए हम नहीं करा पाए थे, हमारे यहाँ पे स्टॉल लगना था जो कि एरोसोल एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट रिसर्च सोसाइटी दैट इज फॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स गलवार यूनिवर्सिटी, headed by Professor S.C. Sir, Professor R.C. Ramola sir, Dr. Tushar Kandari, myself and my wife is also secretary and co-secretary of the society. हम लोग यहाँ पर एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ये कहें कि हम पहाड़ी पे हैं, पहाड़ पे हैं, जैसे अभी डॉक्टर दीवान सर ने आपको यहाँ के जो रिजल्ट्स को दिखाए होंगे, जो वाटर क्वालिटी एयर जो बारिश का पानी है उसमें जो है इस तरीके के जो कंसंट्रेशन मिलना, तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन है कि वी आर गेटिंग द लार्ज नंबर ऑफ एरोसोल कंसंट्रेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड टू द हाई एल्टीट्यूड। एक अलार्मिंग सिचुएशन आज नहीं तो कल नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में होगी, तो डेफिनेटली हमारे जो रिकमेंडेशन है हम सारी मेरी चीज को हम सबमिट करेंगे, और हम आप लोगों से भी हम मांगेंगे कि आप लोग भी प्लीज अपने अपने रिकमेंडेशन सबमिट करें ताकि हम इसको जो है आगे एक फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस की तरफ हम इसको मूव करें। हमारे 42 इनवाइटेड स्पीकर रहे, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम के साथ जब हम बात करने गए, उनको इनवाइट करने गए, उससे किसी पद से मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कितने सेशन है, मैंने कहा मैडम 12, उन्होंने कहा इनवाइटेड तो मैक्सिमम 24, हमने कहा मैडम देयर आर मैनी पैनल सेशंस, और एक हमने सेशन में कम से कम 4 इनवाइटेड स्पीकर्स को अकोमोडेट किया, जनरली 1 या 2 होता है। हमने कहा हमारा जो रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकता है कि जब मैक्सिमम इनवाइटेड स्पीकर्स को हम टॉक दें। कुछ लोगों से नाराजगी मेरी रही होती कि भाई मैं सबको नहीं करा पाए, लेकिन 42 इनवाइटेड स्पीकर्स हैं जिनका जो है हमने यहाँ पर एक अच्छा नंबर हमने यहाँ पर दिया। डेफिनेटली उनका एक्सपर्टाइज वो जरूर काम आएगा, उनके प्रेजेंटेशन से अगर मेरी टीम ने यहाँ पर रखे हुए हैं, आप लोगों को कुछ भी अगर लगता है कहीं पर कोई क्वायरी है किसी से लेकर, हम उनके ईमेल्स प्रॉपर शेयर करेंगे, और जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट बुक है उसमें भी उनके एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। इसमें जो TSI डॉक्टर रामाकृष्ण शेट्टी, उन्होंने जो बेस्ट पोस्टर के लिए उन्होंने 3 अवार्ड दिए हैं। 5,000 का जो कैश प्राइज है वो हम अभी अनाउंस करेंगे आगे वाले प्रोग्राम में। और इसमें हमारी जो टीम है उसको हम, क्योंकि एक होता है ना कि घर में जब कुछ प्रोग्राम होता है तो खुद भी खाना भूल जाते हैं, खिलाते रहते हैं, वैसे हमारी टीम जो आगे बैठी हुई है, ये सब जो जैसे चलने का, ये हमारे फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, ये डेफिनेटली हम इनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, सम्मान करना चाहेंगे इनका, तो ये समय के साथ आगे वाले शेड्यूल्स में जो है हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ कल बद्रीनाथ चल रहे हैं। हमारी जर्नी हमारे 2 दिन तक अभी हम लोग और रहेंगे, जो आज मूव कर रहे हैं उनके लिए विश यू हैप्पी जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी। थैंक यू। With immense pleasure, we are pleased to invite Honorable Professor R.S. Negi on the podium. Please, sir. थैंक यू। नमस्कार। आज के इस सेकंड इंटरनेशनल AAC कॉन्फ्रेंस के वैलिडिटी फंक्शन के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकुर कंसॉल
उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल बोर्ड, हमारे बीच में बैठे डाइस पे डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, IITM दिल्ली, इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर प्रोफेसर PC उपाध्याय, हमारे मित्र, कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे छोटे भाई डॉक्टर आलोक सागर गौतम, ऑफ द डाइस हमारे मित्र R शंकर, पुराने मित्र हमारे हैं, ग्लेशियोलॉजी में काम करते हैं, अदर डेलीगेट्स, साइंटिस्ट, colleagues of the university, students, dear friends, सबसे पहले मैं भी इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा रहा, जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस के जो पेपर थे, जो थीम थी हमारी, उसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसमें भी लाइफ साइंस और एग्रीकल्चर साइंस से कम 28 पेपर्स उसमें थे। 18 लोगों ने उसमें प्रेजेंटेशन किया यस्टरडे, कीनोट स्पीकर भी थे। तो जब एक कहावत भी है, गाड़वाली में भी कहते हैं और अदर प्लेसेस भी कहा जाता होगा कि जब लड़की की शादी होती है तो जब उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है तो आदमी जब लगने से काम करता है, पूरी शिद्दत से काम करता है और पता नहीं चलता, उसको थकान तब लगती है। अभी जैसे आलोक कह रहे थे कि जब लड़की की विदाई हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि भाई अब तो कमर भी टूट रही है, अगर जगह भी बहुत दर्द हो रहा है। तो उसी प्रकार से इन सारे बच्चों ने, जो इनकी टीम थी, मैं उसको भी बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। जैसे डॉक्टर आलोक सागर गौतम ने किया कि लगभग 250-300 पार्टिसिपेंट्स में थे। और एक बहुत अच्छी बात है कि बाहर से अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छे पेपर थे, क्योंकि हम लोगों ने भी क्लाइमेट चेंज और इस पे काम करते हैं, कुछ एरोसोल पार्टिकल्स पे दीवान सिंह बिजली के साथ आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी कुछ काम किया। आलोक सागर गौतम और हम PM 2.5 और 10 पे काम करते हैं कुछ। तो ज़्यादा ने कहते हुए सबसे पहले कि डॉक्टर आलोक सागर गौतम को बधाइयाँ, क्योंकि यंग बर्निंग साइंटिस्ट भी है, एकेडमिशियन है हमारी यूनिवर्सिटी के। कई लोग नाराज भी होते हैं, कई बहुत खुश भी होते हैं। आलोक को मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अपने काम में अपनी शिद्दत को रखिए, अपने काम को करते जाइए। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, अच्छा बोल रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहा तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है, हम आने वाले टाइम में आपको और अच्छा करके दिखाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जो यंग जनरेशन भी है हमारी, वो देखें कि इस ढंग के प्रोग्राम्स। और आज की डेट में कॉन्फ्रेंस कराना, हम लोग पहले बहुत सारी कॉन्फ्रेंस कराते थे, बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर गौतम ने कहा, एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए पहले तो मिनिस्ट्री बहुत नॉर्मली दे देती थी। अभी डॉक्टर श्रीवास्तव से बात हो रही थी कि मिनिस्ट्री में से पैसा लाना, और गौतम ने भी कहा बहुत मुश्किल का काम है। भारत सरकार ने पैसा भी कटेल कर दिया है कम से कम। फिर एक तरफ तो थीम रहती है कि आप वर्क करिए, R&D वर्क करिए, सारी चीजें करिए, पर आदमी के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो मैं तो आलोक को कह रहा था, जब मैंने देखा कि इतने स्पॉन्सर ने, शुरू में मुझे बोला कि सर कैसे होगा, मैंने कहा हर जगह भेज दीजिए। आलोक को मैंने बोला जितनी भी एजेंसीज है जहाँ पे हमारा होगा, कई लोग उस हमने कॉन्ट्रैक्ट भी किए। तो जैसे मैंने तो आलोक को बोला था ICFRE और FRI के लिए, मैंने कहा आप भेजो, मैंने बात की थी। बल्कि उसके बाद जब मुझे वहां से पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला तो मैंने आलोक को भी नहीं बोला कि यार ये नहीं होगा। उन्होंने कहा हमारी बहुत सारी मजबूरी होगी। अभी डॉक्टर श्रीवास्तव से भी यही बात हो रही थी। तो करने के लिए पर अपनी जिज्ञासा है, आदमी करता है। आलोक ने एक एफर्ट्स किया, पहले भी किया था और इस टाइम किया। तो मैं बहुत बहुत बधाई आलोक सागर गौतम आपको देना चाहता हूँ और आपकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके से, और हमारे जितने भी अदर अलाइड साइंसेज और अदर स्कूल्स के जितने कन्वीनर्स थे। देवेंद्र बैठे, मैं कल देख रहा था कि ये होता आपस में आदमी का कोऑर्डिनेशन होता है। मैडम वर्मा बैठी है, किरण बैठी है, बहुत सारे। अभी मैं डॉक्टर अपने मिस्टर कहाँ गए, गांगिल है कहीं बैठे हुए,
यानी शायद अभी इंजीनियरिंग के हमारे मित्र थे वो चले गए। तो बहुत सारे स्कूल्स के सभी लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन में काम किया कि भाई चलिए, कल हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी कहा था कि एनईपी का जो एक मोटो है कि आप जुड़िए एक दूसरे के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में काम करिए, अलाइड फिट्स में काम करिए। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए कि कल जो लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग अभी जा रहे हैं विश यू वेरी गुड हैप्पी जर्नी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I would like to invite Mr. Prashant Pandey, Technical Consultant A, Uttarakhand Pollution Control Board, for important announcement. Very good afternoon to all of you on the right and of the right. This is an announcement that we had a great collaboration with Uttarakhand Pollution Control Board, Dr. Ankur Kansal, along with Dr. Alok Sagar Gautam, HLB Garhwal University, along with Dr. Hakkar sir, and that scientist. I ask you to come on the platform, sir. And one more, Dr. Sunil Gulia sir. He is a senior scientist from NEEL, but unfortunately he has a leave, so he went on last day. So this is the technical collaboration along with the three institutions, along with Uttarakhand Pollution Control Board, for the scientific, technical advancement, infrastructure development for the mitigation of air pollution, which is a serious concern nowadays. So I'll ask him sir to shake hands for the technical qualification with the Uttarakhand Pollution Control Board with the Guru Jamshedpur University, and for the sir with the HLB Garhwal University and Uttarakhand Pollution Control Board. Thanks a lot. And we wish and hope for the better result and for the better future. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I'm glad to invite Honorable Chief Guest Dr. Ankur Kansal on the podium. नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर टीसी पाते, प्रोफेसर नेगी जी, गौतम जी और श्रीवास्तव सर, आप सब अत्यंत बधाई के पात्र हैं। इतने कम टाइम में इतना एक इंटरेक्टिव सेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलेबोरेशन, इंटर यू कैन से वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने जिस लेवल का पब्लिकेशंस को अपने जो आइडियाज हैं वो यहाँ शेयर किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। उससे भी ज़्यादा जो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, जो एमिनेंट हमारे यंग ब्लड्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी अपने थीसिस लिख रहे हैं, एमएससी में हैं, पीएचडी में हैं, उन्होंने जो काम यहाँ पर प्रेजेंट किया है, आई होप कि यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से कुछ काम को वो एक ग्लोबल पहचान बनाने में मदद होगी उनको, और अपने आइडियाज़ को डेफिनेटली वो यहाँ से कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में जरूर लेके जाएंगे, और इसी प्लेटफॉर्म से उनको अपनी ज़िंदगी की जो कामयाबियां हैं उनकी सीढ़ियां चढ़ने का एक मौका मिलेगा। तो वो सभी लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं इसी कड़ी में जो आज के पर्टिकुलर सेशन हुए थे, जिसमें हालांकि मैं कल कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाया, बट आई वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द work presented by some girl of Gurukul Kangri University, Madam Goswami. One of the research was presented by this foreign fellow of this, I'm forgetting name, Mr. Daniel Clark. So I congratulate you both for submitting excellent work. So I hope the yesterday or day before yesterday with the same enthusiasm the participants have presented their work. So with these words, I am very much thankful to the university, to the eminent personalities, professors and the departmental officers present here,
and a august presence here for making this conference successful. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I request for Professor T.C. Upadhyay to present memento to our chief guest. Please, sir. Now it's time for certificate distribution. I would like to invite Dr. Alok Sagar Gautam for distribution of certificates. थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारी जो अगली टीम है उसमें हमारे एमएससी स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, faculty members of this department, staff of this department, and also the faculty of other universities and colleges. इसमें कुछ मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि हम लोग उनको एक सम्मान देना चाहते हैं और डाइस के साथ मैं उनको एक एक करके बुलाऊंगा। आप लोगों के लिए जो किट सेमिनार किट है वो हम लोगों को अब देंगे हम आप लोगों के लिए। आप लोग आइएगा और मेरी डाइस के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जो सेमिनार किट है वो प्रदान करें। सबसे पहले जिन्होंने पूरा मेरी एब्सेंस में सारे काम जो संभाले, डॉक्टर तुषार कंडारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गोपेश्वर, वहाँ से वो आए और अपनी फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, और इन्होंने पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया। मैं डाइस के सभी डिग्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्टर तुषार कंडारी को सेमिनार की प्रदान करें। ट्रैवल के लिए जिनको हरिद्वार से लेकर के और सारी चीज़ों को मैनेजमेंट, डे एंड नाइट 24/7, क्वेश्चन आंसर क्वायरीज सबकी जो है सलूशन देने वाले डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर चिल्ड्रन डिग्री कॉलेज हरिद्वार। सर लंच कितने बजे होगा, ब्रेकफास्ट कहाँ होगा, रुकने की व्यवस्था है या नहीं है, ये बस में थे इनको ज़्यादा फेस करना पड़ा। धन्यवाद अमरदीप। मिस्टर अभिषेक जोशी, जिन्होंने हमारे साथ डीएसपी फंडिंग प्रोजेक्ट में 2 साल काम किया, उसके बाद ये पीएचडी स्कॉलर हैं एसआरटी कैंपस वासाई हॉल में। मेरे अंडर में इन्होंने सुपरविजन काम किया है। एक पेपर था इनका क्लाउड कंडीशन न्यूक्लियाई पे, एसआरटी कैंपस वासाई तो फर्स्ट पेपर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में इन्होंने पब्लिश किया। किसी भी टीचर के लिए उसकी फैमिली और उसके रिसर्च स्कॉलर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले डांट उन्हीं को पड़ती है, तो अच्छाई भी उन्हीं की, बुराई भी उन्हीं की है, हर जगह वही हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे रिसर्च स्कॉलर, मैं उनको कभी छोटा भाई बोलता हूँ, कभी उनको हर तरीके से, जिस तरीके से वो मुझको एक्सेप्ट करते हैं मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। मिस्टर संजीव कुमार, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स।
क्योंकि हमारा श्रीनगर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जब बाहर की कॉन्फ्रेंसेस को देखते हैं तो कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं। ये वाटर बॉटल्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने सिलेक्टेड देहरादून से शॉपिंग की थी। ये बैग्स भी हम लोगों ने बहुत सर्वे करवाए थे। आप देखिए इसमें नक्शा पूरा आ रहा है अच्छे से। एक अच्छी खासी मार्केटिंग की सर्वे हुआ है देहरादून में, और इनके लिए हमने 10 to 15 डेज का पूरा एक टाइम दिया है। सफिशिएंट सारी चीजें बार्गेनिंग सब कुछ करना। मिस्टर तौफीक अहमद, इनकी फिजिक्स सबमिट होने वाली है अभी, PhD फिजिक्स। इन्होंने पूरा जो आप लोगों ने प्लान्स देखे होंगे, वो सर ये वाला ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया। थैंक यू तौफीक। सारी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ऑल सेशन, यूट्यूब, पहाड़ों का राई चैनल, इन सबको लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले। और शांत प्रिय मेरे रिसर्च स्कॉलर मिस्टर करण सिंह। यस सर, यस सर, यस सर, हमेशा यस सर। वेरी गुड। इस हाल में सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी के पास है, वो मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कैशियर है इस कॉन्फ्रेंस के, और बड़ी शिद्दत के साथ जो है उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर संभाला है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन सब बहुत अच्छे से जो है इवनिंग तक रेस्पॉन्स अच्छा रहा है। और उन्होंने मेरे साथ DST फंडेड प्रोजेक्ट में काम भी किया है, लेकिन इस समय डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वो रिसर्च स्कॉलर है। मिसेस निधि कैरोला, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वेरी गुड बेटा। प्रोफेसर वीना जोशी मैडम, जो कि लगातार हमारे साथ 3 दिन से हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ कहती हैं, आलोक हमने खूब एंजॉय किया है, लेक्चर भी अटेंड किए हैं, डिपार्टमेंट भी विजिट किए हैं, लैब भी विजिट किए हैं, और मैडम और सर के साथ पूरा टाइम भी मैडम दिया। थैंक यू सो मच। और इसमें उनके साथ भी PhD कर रहे हैं मेरे को प्रोवाइड बनाने वाले और श्याम नोटियाल। इनका वर्क एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पर है। ये PM 2.5 PM10 की सैम्पलिंग हुई है लास्ट 4 इयर्स की, उस पर ये काम कर रहे हैं। वेरी गुड। हमने, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स है, हम जो भी ईमेल मैसेज करते हैं, रेस्पॉन्सेज से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना आपके साथ स्पीडअप हो पाएगा। सब तो नहीं साथ चल पाते हैं इसमें, क्योंकि जो लिस्ट आउट हुई है, कि आप देखिएगा मेरे डिपार्टमेंट के हैं, बाहर के भी हैं, दूसरे कैंपसेस के हैं। तो इसमें मिस्टर शुभम शर्मा बहुत साइलेंट तरीके से इन्होंने जो है स्मूथली जिम्मेदारी के साथ सारी चीजों को बखूबी निभाया। थैंक यू शुभम शर्मा, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, SRT कैंपस वास्ता कॉल। सेम जो मैंने लाइन अभी पहले बोली थी, उनको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो यहाँ पर आकर के उन्होंने किस तरीके से मेरे साथ चलते रहे, मुझे दिखा कि भाई कौन है। कृष्णपाल सिंह, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, SRT कैंपस वास्ता कॉल।
मिसेस सुदीप्ता कंडारी, ये डॉक्टर तुषार कंडारी की वाइफ है। आप आए तो देख ले सकते हैं उनकी तरफ से। थैंक यू। उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑर्गेनाइज कमेटी की तरफ से। ये जो कुछ नेम्स जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, और यकीन मानिए आप लोग कॉन्फ्रेंस के अलावा भी हम लोग जब भी कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पे जाए सोशल मीडिया के, हम लोग कोशिश करेंगे कि कनेक्टिविटी बनी रहे और ब्रेक ना हो। ये एक अच्छे जो है एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन की तरफ मूव करें। अब मैं मूव कर रहा हूँ, TSI ने कैश प्राइज जो है कुछ हमें दिया है बेस्ट पोस्टर के लिए, और इसमें हमने असेसमेंट करवाया था। तो नाम मैं अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वॉइसलेस हो जाएगी कि मेरा नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे पर्सन को दिया था कि उनका कोई किसी से कोई मतलब नहीं था और बड़ा फ्रेश असेसमेंट था। मैंने भी अभी बिल्कुल फाइनल में मैंने लिखवाया है, कहीं कोई किसी तरीके का यहाँ पर कहते हैं कि नहीं है, फिक्सिंग टाइप की जो है, ठीक है, ओपन है। इसमें कहीं पर आप मार्किंग देख सकते हैं, अंदर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी बिलीव नहीं है। और इसमें इन्होंने 5000 हमको दिया हुआ है। इसमें हम कैश प्राइज ही इसमें हम यहाँ पर दे रहे हैं। TSI जो इंस्ट्रूमेंट कल जो लेक्चर हुए थे उसमें मैं अपनी डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर तौफीक अहमद जिन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन में बेस्ट फर्स्ट प्राइज जो है दिया है, इनके लिए कैश प्राइज 2000 रुपीज का मैं डॉक्टर अरुण कंसल से रिक्वेस्ट करूंगा सर कैश प्राइज और सर्टिफिकेट प्रदान करें। Next prize, Mr. Sunil Kumar, Department of Physics, Bangalore. 1000 rupees cash prize. Third one is Krishnapal Singh of PNG Government PG College, Namnagar, Nainital. 1000 rupees cash prize and certificate on behalf of TSI Instrument Private Limited. अब मैं वो नाम अगर हिंदी में बहुत सारे नाम जिन्होंने जो है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, गलतियां होती हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, सीखते भी हैं, हम लोग कुछ ब्लाइंड फेथ भी करते हैं उन पर और डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। आप लोग देखा होगा ऑडिटोरियम के बाहर जो जगह जो रंगोली बनी हुई है, यहाँ पर हमने लास्ट 1 वीक से जमीन पे बैठ के खाना खा रहे थे हम लोग। रात के 11 बजे खाना मंगाया, कुछ सर्व कर रहा है, कुछ खा रहा है। एक बड़ा अच्छा एनवायरमेंट जिन्होंने क्रिएट किया। मेरी डांट को भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिया कि सर इस समय हो सकता है पैनिक इसलिए डांट रहे हैं। मैंने बहुत चीज़ों को बीच बीच में उनको जो है ऐसे होता है ना कि 11 बजे अगर सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले सारी चीज़ें होनी चाहिए। एज ए ऑर्गेनाइज कमेटी मेंबर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि टाइमली सारी चीज़ें हो। मैं अपने सारे MSc स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ और एक फोटोग्राफ सबके साथ यहाँ पर हो, एक स्वीट मेमोरीज के साथ। मेरी पूरी इस हॉल में बैठे हुए हमारे जितने भी डेलीगेट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, डाइस पे बैठे हुए सारे हमारे गेस्ट, इन सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप इसी तरीके से जो है जन्नत को अपनी उन्नति करें अपनी लाइफ में। सारे MSc स्टूडेंट्स प्लीज। इनकी जो जैकेट है वो दिल्ली से प्रिंट हुई है।
इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स AAC-2022 सारे इनोवेशन जितने हो सकते हैं इन बच्चों ने जो रिकमेंड किए हमने कोशिश की कि इनके चीज़ों को फुलफिल किया जाए। ये फोटो आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगे ताकि आप लोग हमेशा इस एरोसोल एयर क्वालिटी क्लाइमेट चेंज की जो मेमोरीज है उसको आप हमेशा साथ में रखें। बच्चों बैठ जाओगे तो हम लोग के फोटो आएंगे, अदरवाइज हम लोग के भी नहीं आएंगे फिर फोटो। आपको टाइम डेली सेट होने जल्दबाजी नहीं। Thank you very much. And now I would like to invite all of you for lunch, please.
अरे भाई तू ऊपर छोड़ दो बेटा, तुम उसको तुम अपना सामान निकालो। अरे रुक जाओ, मैं भी हूँ। ये कॉर्डलेस हो गया बच्चों को देखना, दो कॉर्डलेस हम दो है करण सर जोशी सर नहीं करण सर कहाँ है? ये तो खत्म हो गई सर सब बंद कर दो सर, सिस्टम बंद कर दो पूरा। निकाल सब निकाल दो प्रोजेक्ट रहने दो।